on National Education Policy 2020 implementation, challenges and path ahead. As you know, this lecture series is jointly organizing by Indian Association of Physics Teachers and School of Physical Sciences, JNU. I welcome and thankful to Professor Sarat Patra, Director, IIT Vadodara, for his gracious presence and presidential remark. But welcome, sir, you in this, in this gathering. I also delighted to Professor B.D. Srivastava, President IAPT, for accepting our invitation to deliver a lecture on NEP 2020. I also welcome organized team for making this series successful. So this is very important. Our this is organized team working day and night to make this this series successful. Finally, I welcome faculty members, colleagues, students, participants, those who are joining this lecture series. I hope this lecture series on NEP 2020, especially today lecture, will be fruitful to understand NEP 2020. Welcome you again. Yes. Oh, over to you, madam. Madam Jain. Yes. Yes, sir. Now I think. Thank you, sir. Yes. Professor Patra for procedural remark, I think so. Madam Poonam, you can take the lead now. Okay. Thank you, sir. Erasmus has rightly said, and I quote, "The main hope of the nation lies in the proper education of its youth." A very charming and a blessed good morning and a hearty warm welcome to our distinguished speaker of the day, Professor B.D. Srivastava, sir. Also, we are delighted to have our special guest, Professor Sarat Patra, sir, Professor P.K. Aluwalia, sir, and Professor Kedar Singh, sir, who is the Dean, SPS JNU, and my dear participants. As usual, I am Dr. Poonam Jain, your host and the Executive Council member of Indian Association of Physics Teachers. Welcome you all for the 4th online lecture organized by the School of Physical Sciences, Jawaharlal Nehru University, and Indian Association of Physics Teachers. The title for today's lecture is NEP as it stands today. Before beginning with the formal session for the day, this is to inform you that this session is being recorded and streaming live on YouTube. There is an important announcement for the participant. Kindly post your queries and questions related to the talk in the chat box only, so that they can be considered after the talk. All the participants are now kindly requested to mute their mics during the whole session for the smooth conduct of the session. Without further ado, I request Dr. Seema Vats, the President IAPT RC1, to introduce our chief guest, Professor Sarat Patra, the Director IIIT Vadodara. Over to you, ma'am. Good morning, everyone. Thank you, Poonam. Thank you so much. I would like to take this opportunity to express my deep regards to our chief guest, Professor Sarat Kumar Patra. And it's an honor and my immense pleasure to introduce him. Professor Sarat Kumar Patra is presently a director at Indian Institute of Information Technology, this is IIIT Vadodara. His research interests include communication and signal processing. In these fields, he has published various articles in international and national journals and guided around 24 MTech and PhD students. He has done his PhD from University of Edinburgh, UK, on development of fuzzy-based channel equations. He had
supervised various major projects sponsored by DRDO, MHRD, and BRFST Ahmedabad. He is also a reviewer for esteemed journals like IEEE, IEEE, Taylor and Francis, Springer, Photonics, and Network Communications. His introduction could take the whole day. All we can infer from his biodata is that he is a genius in all respect, and as he perseveres hard to take his institute to great heights, we welcome you, sir, and kindly enrich us with your thought-provoking insights. Thank you, sir. Thank you, Professor Shiva. Good morning to you all. I hope I am audible. Yes, sir, you are. Professor Srivastava, Professor Aluwalia, other learned colleagues in the group, I am really privileged to be in this group among a large gathering of learned people and scientists. We don't call ourselves as scientists, we call ourselves as engineers, but people in physics are truly scientists. This lecture, today's lecture or today's event is a part of a series of events we are holding, and it will certainly provide a lot of information and lot of scope to other faculty colleagues and other people in the community to understand NEP more closely. And today's one is the fourth one in the series, and the topic is NEP as it stands today. It's an interesting topic, and it is interesting considering the series of events, and also it is interesting considering the timeline of the event or the timeline of this talk, since we all are talking about NEP and we are trying to model ourselves or modify ourselves, model ourselves or prepare ourselves to adopt NEP and to get into the NEP formula by which the education system goes through a massive transformation. If we look at the NEP 2020, or which was approved by the Parliament in 2021 and was adopted by the government in 2021, it had got four major points in it. One was the school education, one was higher education, there are other key focus areas, and making it happen. Four categories of it. And this group mostly has relationship to higher education because all of us belong to the higher education segment. But nevertheless, physics is an integral part of science, and science is an integral part of primary and secondary education, or which is the school education to be more true. Now, if you look at the major components of higher education, in terms of NEP, these components include higher education, which should be forward-looking education system, institutional restructuring, holistic and multidisciplinary education, optimal learning environment and support for students, motivated, energized, and capable teachers, which affects us as a whole, equity and inclusion, teachers' education, quality academic research, transforming regulatory system, and effective governance and leadership. These are the core part of the major components in the higher education system. But there are few other things which also affects us, and these include professional education, adult education and lifelong learning, promoting Indian language and culture, technology use and integration, online digital education, strengthening central advisory, affordability and quality education for all, and all of its implementation. Looking at all these points, if we look at where we stand in today's context, now one is one major change that is coming up with this new education policy is the curricula and the pedagogy structure, and the school education getting into 5+3+3+4, which is again 12, which is slightly different from what we have been through during the schooling time. I was in a way fortunate because I saw the transition from 11th to 10th, which was the first board exam, and then appearing 12th as a second board exam, and then moving into professional courses. Then there is a stronger emphasis on the multilingual Indian and Indian languages. In fact, people have started to work on it, and we belong to particularly to physics to a lesser extent, probably engineering to a larger extent. In our country, engineering education and professional education as a whole is being taught in English. And with this new education policy,
some amount of education in the regional languages or the local languages will also come into effect in engineering. Of course, with respect to physics, certainly there are many universities and many states where graduation level teaching is also done in their local languages. And with this respect, a lot of literature is being developed, and every state, many of the states have major milestones, and they have started to convert books or rewrite books and rewrite technologies in Indian language or their state languages. Now, there is another which affects all of us, is a new national assessment policy, and it is hoped that the NAC and the NBA and all these will change to become a single entity whereby all the institutions will be evaluated by that in terms of their quality. We also, what it would bring in is robust and transparent process for recruitment of teachers and merit-based performance. This is a large task or a huge task in terms of a country like India, which is huge in terms of demography, social structure, the varieties of the institutions and the levels of institutions. Then one is setting up multidisciplinary educational research universities. I think this is one of the largest tasks. Of course, we have large number of multidisciplinary universities, but on the other end, we also have large number of universities which are into a single area, like my institute, which is into information technology. We have institutes, large number of institutes which are only into engineering. But when we look at multidisciplinary education universities, this is going to be a bigger changing event. I think also India would bring in light but tight regulation, national mission for mentoring. Academic bank of credit is going to be another important milestone in this. It would permit people to move from university to university while getting a degree from one would learn from different universities. I think this, what we are doing through this, this group is really great, and it should bring in a lot of knowledge into the system and lot of information to individuals. Thereby, people would be ready to take up the challenges of NEP and bring in new changes. I would like to thank you with that for the opportunity to speak to you and meet you all, and we could continue. In fact, I am traveling. I have held up on the way for this event particularly. So I would seek your apologies for disconnecting after my talk when the talk is going on, and continue my journey. I hope you won't mind about it. With this, I close. Thank you. Thank you very much, Professor Patra. Great that you have joined us despite the fact that you are traveling. Thank you so much, sir, for the presidential remarks. Now I request Professor Manish K. Kashyap, sir, School of Physical Sciences, Jawaharlal Nehru University, to introduce our speaker, Professor B.D. Srivastava. Over to you, sir. Thank you, Dr. Poonam Jain. Welcome, everyone. So today, for the fourth lecture of our NEP series, we have the eminent personality with us, Professor B.D. Srivastava. He is the professor at Government PG College, Dhar, Madhya Pradesh, and his area of interest are material science, spectroscopical studies, ultrasonic investigation, EXAFS. He is having a 30-year of teaching and research experience. He has guided 9 PhD students already for PhD degree, and 6 students are at this time pursuing research under his supervision. And he has published 73 research papers in the national and international journal of repute. He has attended more than 100 conferences, national as well as international seminars. He is the member of different committee of university and government of Madhya Pradesh. He is the chairman of Indian Association of Physics Teacher, RC09, since 2017, being the chairman. More than 125 programs he has conducted, and evaluation and development of laboratory and demonstration equipment, and planning of comprehensive lab program. He holding conference, seminar, workshop, etc. for the teacher,
His specific achievements are the organization of 1 week teacher training workshop for EMRS under the mentorship of Ministry of Tribal Affairs, Government of India during October 2020. He has delivered more than 500 lectures as the state level master trainer of Election Commission of India since 1989. He is chartered member of Rotary Club since 2010. He has organized many experimental workshops for school teacher at block, tehsil, district, and division level. So with this, I can say that he is a versatile personality, not only the expert in physics, but to promote the education among the masses for his state, for his country as well. So with these words, I invite Professor B.D. Srivastava to give his lecture to us. Professor B.D. Srivastava ji. Thank you very much, Dr. Kashyap. Good morning to all. This is the great opportunity for me. You provide me a platform to discuss the NEP, which we are being implemented. So I am very thankful to Professor Sarath Kumar Patra, Director, Indian Institute of Information Technology, Vadodara, Organizing Committee, Kedar Singh Ji, Dean, SPS, JNU, and a special thanks to School of Physics, Physical Sciences, JNU, New Delhi, to give me the opportunity to share some views which we actually NEP in MP we are adopted this scheme in 2021. First, my talk will be on the three part. First part is everybody knows what NEP is. Second one, how we implemented in MP. And third point will be the problems facing in implementation. So as we all know that the policy seeks to restructure school curricula and pedagogy in a new 5-3+3+4 design, so that school education can be made relevant to the needs and interests of learners at different developmental stages. Foundational stage, that is 5 years, a preparatory stage, that is 3 years, a middle stage, that is 3 years, and the high stage, 4 years, covering grade 9, 10th, 11th, and 12th. It aims to achieve universal foundational literacy and numeracy in primary schools by 2025. For this, the Ministry of Human Resource Development shall set up a national mission on foundational literacy and numeracy. Public and private schools, except the schools that are managed, aided, or controlled by the government, state government or the center government. The gross enrollment ratio from preschool to secondary school should be 100% by 2030. Education regarding the of age of actually we can say the 100% in primary section, and what is the GER is defined as the ratio of the total enrollment in education regardless of age to the official population in a given school year, expressed as participation in schools shall be achieved by tracking students and their learning levels to ensure they are enrolled and attending school and have suitable opportunity
to rejoin or catch up at school in case they have dropped out or fallen behind. The medium of expression, as Dr. Sarath Kumar Patra says, the medium of expression until at least grade 5, but preferably till grade 8 or beyond shall be the student's mother tongue or the local or regional language. The three language formula will continue to be implemented in schools, where 2 of 3 languages shall be native to India. The policy seeks to standardize the school curriculum for Indian Sign Language across the country. The Government of India shall constitute a gender inclusion fund to provide equitable and quality education to all girls. Srivastava sir, transgender excuse me, students. Srivastava sir. Do you want to display the slides as well, or you will continue your lecture in this way? So no. I will show some slides also, which we Okay. implemented. This is the basic. I thought This is you. the basic part of the NEP. All So right, fine. that's Fine. why I don't think I'm sorry to there is disturb you. I there is thought that need you. of any slide. Everyone know the what NEP is. So this is the Exactly. just basics of the NEP. If Right, you right. want, then I will leave it and directly. No, you continue, please. I thought you forgot to make a slideshow here. No. Please This continue. is Yes. the basic. This is the basics of the All right. NEP. All right. Please NEP. continue. Okay. Yes. So as I told you that the policy suggests establishing school complexes consisting of a secondary school and other schools offering lower grade of education. All education institutions shall be held to similar standard of audit and disclosure as a not-for-profit entity, says this policy. If the institution generates a surplus, it shall be reinvested in the educational sector, especially in higher education. The policy says the higher education institutions shall aim to be multidisciplinary by 2040. By 2030, there shall be at least one multidisciplinary HEI in or near every district. The policy aims for gross enrollment ratio in higher education to increase to 50% by 2035 from 26.3% in 2018. Higher education institutes shall have the flexibility to offer master program of 2 years for those who have completed 3 years undergraduate program, of 1 year for students who have completed a 4-year undergraduate program or 5-year integrated bachelor's master's program. MPhil program shall be discontinued. The policy says the high performing Indian universities shall be encouraged to set up campuses in the other countries. Similarly, the selected universities, such as those from among the top 100 universities in world, shall be encouraged to operate in India. A National Research Foundation shall be established to facilitate. Excuse me. A National Research Foundation shall be established to facilitate merit-based but equitable peer-reviewed research funding. The policy says that the center and state shall work together to increase public investment in education to 6% of GDP from the current 4.43%. These things are known everybody, as I think, but in MP we are being implemented this policy. So I will share my screen.
Yeah, now it's coming fine. Screen is visible? Yes, sir, it is visible. Okay, so नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो इम्प्लीमेंटेशन और चैलेंजेस के लिए हम आगे की बात करना चाहेंगे। निश्चित रूप से जैसा कि इस पॉलिसीज के अंदर भी कहा गया है कि लोकल लैंग्वेज के अंदर ही जो है वो हम इस चीज को बढ़ावा देना चाहेंगे और हिंदी हमारी मातृभाषा है एमपी के लिए, और इसलिए मैं अब अपनी बात हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रखने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के अंदर इस पॉलिसी को एडॉप्ट किया है। जैसे ये पॉलिसी का पूरा अध्ययन करने के बाद में हम में से प्रत्येक वृद्धजन ये समझ पाने की स्थिति में है कि आज भारत को किन सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके समाधान की आवश्यकता है। नई एजुकेशन पॉलिसी हमको इस ओर प्रेरित करती है कि हम अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए अपने ओरिजिनल थॉट्स जो हैं उनके ऊपर फोकस करें। तो आज आवश्यकता है अपने सभी नागरिकों के लिए पीने के पानी की स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य, बेहतर परिवहन, गुणवत्ता युक्त वायु, बिजली और बुनियादी वस्तुओं की पहुंच आदि आदि। इन एनईपी के अंदर जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे पास में कुछ टूल्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो क्या है? वो उसके लिए एनईपी के अंदर ये दर्शाया गया है कि वर्चुअल लैब्स, दीक्षा, स्वयं प्रभा और इस जैसे मौजूदा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण, व्यवहारिक और प्रयोग आधारित अनुभव का समान अवसर प्राप्त हो सके। हमारी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में हमारा सनातनी वैदिक ज्ञान भी है। वर्तमान में जो उपलब्ध ज्ञान है वो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें हमारे पास में अभी अवेलेबल हैं। अब स्पेशली मैं फिजिक्स के संदर्भ में बात अपनी आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो इसलिए इस युग में फिजिक्स लेबोरेटरी टीचिंग में सामान्य तरीके से बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है। हम जो अपना ट्रेडिशनल तरीका अपनाते हैं उसके अलावा हमको एक नए तरीके पे विचार करना होगा और किस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों को हम अपने जो लेबोरेटरी टीचिंग है उसको भी हम सामने ला पाए। इसके लिए भी हम सब लोगों को मिलकर एक बेहतर प्रयास करना होगा। इन सब चीजों को देखकर, समझकर या स्टडी करके हम जिस एक मंत्र पर पहुंच सकते हैं या जो दिया गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनुषधम, अयोग्य पुरुषों नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ। देवनागरी का एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें कोई मंत्र नहीं बन सकता। हमारे यहाँ उत्पन्न कोई पेड़ पौधा या कोई वनस्पति ऐसी नहीं है जिसे हम औषधि बनाने में उपयोग नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि संसार में कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, बस उसे योग्य बनाने वाला व्यक्ति दुर्लभता से प्राप्त होता है। तो हमारे एनईपी का भी जो एक लक्ष्य है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको हम वो अयोग्य नहीं है, उनको किस प्रकार से योग्य बनाएं। और हम सब जितने भी टीचिंग प्रोफेशन में लोग लगे हुए हैं वो सारे के सारे एक दुर्लभ ही है। दुर्लभ में इसलिए बोलना चाहूंगा कि हमारा जब हम टीचर स्टूडेंट रेशो देखते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस हमको नजर आता है और स्टूडेंट्स की संख्या बहुत अधिक है।
उतने इंस्टीट्यूट्स हमारे पास नहीं है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हम आप भली भांति जानते हैं। न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर के अंदर ये जैसे जो 4 स्टेजेस बताए गए हैं, ये उनको प्रदर्शित करता है कि प्रीवियस हमारी जो है वो एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या था और वर्तमान में जो है एकेडमिक स्ट्रक्चर नई शिक्षा नीति के अंदर हमको एडॉप्ट करना है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, वो ये कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सामूहिक प्रयास से ही ये चीज संभव हो पाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2021 से एनईपी का नया स्ट्रक्चर चालू किया। इसके लिए हम लोगों को ने जो प्रयास किए थे वो 2020 से ही हम लोगों के प्रयास चालू हो गए थे, जिसमें सिलेबस का निर्माण कार्य जो है वो हम लोगों ने किया। सिलेबस का निर्माण कार्य करने के बाद में जो हमने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर व्यवस्थाएं जमाई, वो इस प्रकार जो 4 टाइप्स के जो है वो कोर्सेज जो है वो सिलेबस के अंदर डिफरेंट आर्ट, साइंस और कॉमर्स में इन 4 प्रकार के जो मेथोडोलॉजी है इसका हमने प्रयोग किया कि यदि थ्योरी 6 थ्योरी होती है या 6 क्रेडिट की हम बात करते हैं, CBCS की क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इसलिए इसमें जब हम इन क्रेडिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इन 4 तरीके से कर पाएंगे, या तो 6 थ्योरी हो, या 4 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल्स हो, या 2 थ्योरी 4 प्रैक्टिकल्स हो, और या फिर 1 ट्यूटोरियल और 5 थ्योरी हो। ये वाला फॉर्मेशन नॉर्मली आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में जो है वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। हमने जो प्रपोज किया था हमारा स्ट्रक्चर, जिसको कि अभी हम फॉलो भी कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो 4 ईयर डिग्री कोर्स यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। इसमें फर्स्ट ईयर के अंदर मेजर, माइनर, जो कोर ग्रुप है अभी जिसको हम स्ट्रीम बोलते हैं कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम, तो अब नई एजुकेशन पॉलिसी में ये स्ट्रीम करीब करीब खत्म हो जाएंगी और विद्यार्थी जो है वो एक मेजर सब्जेक्ट अपना, अभी जिसको हम कोर ग्रुप बोल रहे हैं या स्ट्रीम बोल रहे हैं, उस एक स्ट्रीम में से एक सब्जेक्ट लेगा, वो उसका मेजर सब्जेक्ट होगा। दूसरा वो अपना मेजर कोर में से भी ले सकता है और कोई अन्य सब्जेक्ट भी ले सकता है, वो सेकंड सब्जेक्ट होगा, दैट इज नोन एज द माइनर सब्जेक्ट। एंड थर्ड वन इज द ओपन इलेक्टिव और जेनेरिक। ओपन इलेक्टिव में वो किसी भी फैकल्टी का जो है सब्जेक्ट चूज कर सकता है। फाउंडेशन कोर्स है, स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, और वोकेशनल कोर्सेज इसमें रखे गए हैं, और साथ में एक प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट जो है ये सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट होने चाहिए। ये प्रोजेक्ट का भी अपने आप में एक मेजर जो है वो रोल दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब विद्यार्थी पहले साल के क्रेडिट अपने 40 पूर्ण करेगा तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। सेकेंड ईयर वो जैसे ही कंप्लीट करता है, मतलब 40 और 40 80 क्रेडिट उसके होते हैं, तो ही विल गेट द डिप्लोमा। एंड थर्ड ईयर में वो यदि फिर से 40 क्रेडिट थर्ड ईयर के प्राप्त करता है तो ही विल गेट द डिग्री। एंड फोर्थ ईयर के अंदर वो जब अपने 40 क्रेडिट पूरे करेगा तो उसको बैचलर इन रिसर्च, BSc इन रिसर्च, BA इन रिसर्च और BCom इन रिसर्च, ये डिग्री उसको जो है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। PG कोर्स जो है वो 1 साल का होगा, ये 4 साल के बाद में, तो यदि 4 ईयर डिग्री कोर्स उसने किया है तो PG जो है वो 1 ईयर का होगा। अब यहाँ एक और सुविधा स्टूडेंट्स को दी है, क्योंकि PG कोर्स वो जो उसने मेजर सब्जेक्ट चूज किया है उसमें ही वो PG कर सकता है।
यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक सुविधा और दी है कि यदि वो माइनर या ओपन इलेक्टिव में से 2 साल पढ़ने के बाद यदि उसको ऐसा फील होता है कि उसको जो है मेजर जो सब्जेक्ट उसने चूज किया था उसमें उसको पीजी नहीं करना है, तो माइनर सब्जेक्ट में 4th ईयर में जाकर वो स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स की जगह जो माइनर सब्जेक्ट के जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी यदि वो स्टडी करता है, उतने क्रेडिट वो प्राप्त कर लेता है, तो ही विल बी एलिजिबल फॉर द इन पीजी। माइनर के अंदर वो भी जब एज गुड एज मेजर हो जाएगा, जब 4th ईयर के अंदर फाउंडेशन की जगह अतिरिक्त रूप से उसमें क्रेडिट प्राप्त कर लेगा, तो उसमें भी वो पीजी कर सकने की स्थिति में आ पाएगा। जैसे कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली जो पॉलिसी है, उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि 160 क्रेडिट के बाद में ही विल गेट द डिग्री बैचलर विथ रिसर्च। फर्स्ट ईयर के बाद में मीन्स 40 क्रेडिट के बाद में ही विल गेट द सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड ईयर में डिग्री एंड 4th ईयर में बैचलर विथ रिसर्च की डिग्री उसको मिलेगी। इसके लिए जैसा कि नई एजुकेशन पॉलिसी में ये बात बहुत एम्फेसिस की गई है कि हमको ई लर्निंग की ओर बढ़ना है। इसी कंटेस्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ जो है हमने स्टार्ट किया है, और हमने 19 से इसको हमने स्टार्ट कर दिया था जब ये ड्राफ्ट कंडीशन में था। इसके लिए हमने ई कंटेंट डेवलपमेंट 4 क्वाड्रेंट में स्टार्ट किया है, जिसमें ई टेक्स्ट अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, असेसमेंट का सिस्टम हमारे पास में अवेलेबल है, और फर्दर रीडिंग जो रेफरेंसेस के लिए यदि स्टूडेंट को आवश्यकता है तो ये उसको ई कंटेंट अवेलेबल करवाया है। अभी तक ये हमारा काम अभी चल ही रहा है। अभी तक की स्थिति यह है कि हमने टोटल 19 सब्जेक्ट्स को इसमें ई कंटेंट डेवलपमेंट में इंक्लूड किया है। टोटल 1000 ई कंटेंट जो है वो हम लोग अभी तक अपलोड कर चुके हैं LMS पर, जो कि NEP का सिलेबस हम लोगों ने डेवलप किया था उसके अकॉर्डिंगली, और टोटल 1000 फैकल्टीज जो है MP हायर एजुकेशन की इस पूरे काम में इन्वॉल्व हैं। For this purpose, the MPHED trained all the faculty in form of FDP. The future plan of MPHED is studio-based video lecture of all the subjects. So this e-learning वाला जो पार्ट है, इसको हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से अभी स्टार्ट किया है, चालू हो गया है, बहुत सारी चीजें उसमें अवेलेबल हैं। और LMS के माध्यम से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम MPDHE मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन का जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसमें स्टूडेंट जो है वो अपने जो भी उसका सब्जेक्ट है उसके संदर्भ में उसके पास में रीडिंग मटेरियल भी मिलता है, क्वेश्चंस भी मिलते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस भी उसमें हमने दे रखे हैं ताकि स्टूडेंट उस विषय को प्रॉपरली समझ पाने की स्थिति में आ पाए। इस पूरे जो प्लान अभी तक एडॉप्ट किया है उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये है कि स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, विद्यार्थी केंद्रित एकेडमिक लचीलापन है कि किसी भी कोर का विद्यार्थी कोई सा भी सब्जेक्ट जो है वो हमारा पढ़ सकता है, बहुविषयक दृष्टिकोण है, बहुप्रविष्ट एवं बहु निकास की उपलब्धता है, रोजगार परक व्यवसायिक पाठ्यक्रम इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु प्रथम वर्ष से ही इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और अप्रेंटिसशिप का जो है वो इसमें प्रावधान किया गया है। इसी जब सिलेबस हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे उस समय हम लोगों ने इन चीजों का भी ध्यान रखा है
कि भारतीय ज्ञान परंपरा का इसमें समावेश हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या हो, एवं यूजी स्तर पर भी एक रिसर्च के संदर्भ में वो अपनी थीसिस टाइप तैयार कर पाए, ये भी हम लोगों की योजना है। क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा है कि किस प्रकार से क्रेडिट को जो है वो हम ट्रांसफर कर पाएंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को ऑनर्स पाठ्यक्रम करने का अवसर है। आर्ट्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देना इसका विशेषता है। जीवन कौशल विकसित करना और व्यवहारिक शिक्षा उपलब्ध कराना, यह भी इसकी विशेषताओं का एक प्रमुख पार्ट है। हमारी जो संरचना पूरी की पूरी सिलेबस को लेकर हुई है, वो मेजर सब्जेक्ट, मुख्य विषय जो है वो 54 क्रेडिट के हैं, माइनर सब्जेक्ट 28 क्रेडिट के हैं, वैकल्पिक विषय या ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो 18 क्रेडिट के हैं, स्किल डेवलपमेंट के 12 क्रेडिट हैं, फाउंडेशन कोर्स है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और हमारे पर्यावरण, ये सारी बेसिक कंप्यूटर्स है, ये 24 क्रेडिट का है, फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये 24 क्रेडिट का है। इसमें अब जो हम लोगों को महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि मेजर सब्जेक्ट है, और विशेष रूप से अभी जो मध्य प्रदेश शासन ने हमको थोड़ी सी रियायत इसमें दे दी है कि मेजर, माइनर या ओपन इलेक्टिव में से हम प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप करवा सकते हैं। वास्तविक रूप से तो मेजर जो सब्जेक्ट लिया है उसमें ही एक प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। खैर एनीवे, अभी हम लोग इसको आने वाले समय में जैसा भी होगा उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे कि वो मेजर में ही हो, लेकिन वर्तमान में मेजर, माइनर या ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में से विद्यार्थी अपना प्रोजेक्ट वर्क कर सकने की स्थिति में है। प्रोजेक्ट वर्क को लेकर जो हम लोगों का IAPT RC 09 का एक मत बन रहा है, वो ये बन रहा है कि हमारे पास में जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो बहुत सीधे बात ये आती है कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे या बड़ी बड़ी बातें होंगी, तो नॉट लाइक दैट। 12th पास आउट जो स्टूडेंट है उसको उस हिसाब से फर्स्ट ईयर के अंदर प्रोजेक्ट जो करना है वो किस प्रकार से करना है, इसी कुछ एक तैयारी हम लोगों ने की है जो आपसे मैं अभी आगे शेयर करूंगा। मेजर विषय में 2 पेपर होंगे, ये हमारी एग्जामिनेशन स्कीम होगी। ये दोनों पेपर 100 मार्क्स के हैं। 75 नंबर के दोनों पेपर यूनिवर्सिटी के द्वारा होना है और 25 नंबर का CC जो है वो कॉलेज लेवल पर करवाना है। इन नंबरों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ पेपर 1 के लिए इस प्रकार है कि इसमें क्लास टेस्ट है, असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है, और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी, ये यूनिवर्सिटी की एग्जाम हमारी 2 घंटे की होगी। इसमें 3 जो है वो वेरी शॉर्ट 50 वर्ड्स के जो है वो क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस जो है वो 200 वर्ड्स में होंगे और 2 जो है लॉन्ग आंसर या 500 वर्ड्स के अंदर जो क्वेश्चन होंगे। इस तरह से 75 मार्क्स का जो है वो हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेजर पेपर 1 के लिए किया हुआ है। मेजर पेपर 2 के लिए भी यही स्थिति है। माइनर सब्जेक्ट में एक पेपर होगा, ये पेपर 100 नंबर का होगा। इसमें 75 नंबर का पेपर यूनिवर्सिटी से आएगा और 25 मार्क्स जो है वो CC कॉलेज लेवल पे जो है वो दिए जाएंगे। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है माइनर पेपर्स का वो भी इस तरह से है। 100 मार्क्स का ये पेपर है। CC के जो मार्क्स हैं वो 25 हैं और यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेगी उसके 75 मार्क्स रहेंगे। CC के अंदर जो इंटरनल वैल्यूएशन करना है उसमें क्लास टेस्ट और असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन ये शामिल किया गया है। यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम जो कि 2 घंटे की होगी
उसमें 50 वर्ड्स के शॉर्ट आंसर, 200 वर्ड्स के कुछ 4 क्वेश्चंस और 500 वर्ड्स के लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चंस जो है वो इसमें पूछे जाएंगे। ओपन इलेक्टिव विषय में भी एक पेपर होगा, ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें 75 मार्क्स का एक पेपर यूनिवर्सिटी के द्वारा होने वाली एग्जाम के द्वारा होगा और 25% का पेपर सीसी एग्जाम जैसे हमने माइनर में किया था कमोबेश उसी प्रकार से होगा। फाउंडेशन कोर्स के 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, हिंदी भाषा का 50 नंबर का और इंग्लिश लैंग्वेज का 50 मार्क्स का पेपर होगा। इस प्रकार से दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे। इसी तरह से पर्यावरण एनवायरनमेंट के लिए 50 मार्क्स, योगा और ध्यान के लिए 50 मार्क्स, इस तरीके से दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स का जो है पेपर होगा। वोकेशनल कोर्स में प्रैक्टिकल होगा और ये प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होगा या 100 मार्क्स का हो सकता है आर्ट्स के अंदर। आपके ये आधार पाठ्यक्रम के जो 4 विषय हमारे हैं, हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, एनवायरनमेंट, योग एंड ध्यान। आधार पाठ्यक्रम में भी 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। अब जो मूल बात मैं आप लोगों से चर्चा करके और हम लोगों का डिस्कशन का पार्ट हो सकता है वो ये कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर मैं हम लोग कुछ मेजरली एम्फेसिस करना चाह रहे हैं कि टोटल जो प्रोजेक्ट्स के क्रेडिट हैं वो करीब जो है वो आपके 24 क्रेडिट हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में 4 क्रेडिट, सेकेंड ईयर में 4, थर्ड ईयर में 4 और फोर्थ ईयर में 12 क्रेडिट। इस प्रकार से कुल जो है वो 24 क्रेडिट का कंट्रीब्यूशन इन पूरी जो है वो 4 ईयर कोर्स के अंदर होने वाला है। फोर्थ ईयर में जब स्टूडेंट आएगा तो मेजर सब्जेक्ट का ही जो है वो उसको 3 पेपर पढ़ना है 12 क्रेडिट का, साथ में उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना है 6 क्रेडिट का और 4 क्रेडिट की उसको एक यूजी थीसिस तैयार करना, प्लस जो 12 मार्क्स का सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट है वो भी उसको करना है। तो ये फोर्थ ईयर में जो मेजर सब्जेक्ट है उस मेजर सब्जेक्ट पे ही आगे अब यहाँ पे हम उसे रिसर्च में जोड़ना चाहेंगे और रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह वो सीख पाए और किस प्रकार से सही भली भांति वो रिसर्च कर पाए, ये आइडिया इस फोर्थ ईयर का जो हमारा करिकुलम है इसमें रहने वाला है। इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए अभी जो हम लोगों ने प्लान किया है वो ये किया है कि वो 3 रिपोर्ट देगा। पहली जो रिपोर्ट होगी वो बहुत ही मतलब जो भी उसका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का जो भी उसका एरिया है उससे रिलेटेड उसको बतलाना है। इसको 500 शब्दों में लिखना है और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि ये टाइप नहीं हो बल्कि हस्तलिखित हो, हाथ से लिखी हुई रिपोर्ट उसको सबमिट करना है और उसकी क्या प्रोजेक्ट की योजना है इसको बताना है। यदि योजना बहुत बड़ी है जिसमें कई विद्यार्थी 5-5, 6-6 के ग्रुप में मिलकर यदि काम करना चाह रहे हैं तो उन विद्यार्थियों को क्या क्या काम उस प्रोजेक्ट में करना है इसका संदर्भ में उसको बताना होगा और क्या उसका कार्यस्थल या कौन सी संस्था होगी जहां पर वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा इसके संदर्भ में बताना होगा और उसका क्या उद्देश्य या क्या उसका जो रेफरेंस है ये उसको बताना होगा कि वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो ऐसे 50 शब्दों में वो अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो देगा। फर्स्ट रिपोर्ट के साथ में ही हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो ये है कि उसका जो भी लक्ष्य है वो बहुत जो उद्देश्य है वो बहुत स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए क्योंकि उसको 60 आवर्स में ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट करना है। सेकंड जो रिपोर्ट्स हम जो है वो स्टूडेंट से मांग रहे हैं वो इस प्रकार से है
कि जो प्रोजेक्ट है उसका वर्क फ्लो क्या है, उसने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है या फील्ड सर्वे आदि किया है उसका वो अपना डिटेलिंग करेगा, और जो उसने सर्वे किया है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या वो मेथड उसने अडॉप्ट की ये बताएगा, क्या उसने लिटरेचर रिव्यू किया है, और इस परियोजना से संबंधित जो कार्य है उसके जो टेक्निकल या लिटरेचर या अन्य जो भी प्रमाणित लेखा जोखा है वो इसका होना चाहिए। कार्य विभाजन के अनुरूप कार्य की प्रगति अलग अलग पृथक पृथक, मतलब यदि बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 5-6 स्टूडेंट्स हमारे साथ में काम कर रहे हैं तो जिसको जो काम निर्धारित है उसको उस कार्य के बारे में ही उसमें लिखना होगा, और समूह में कार्य करने वाले विद्यार्थियों के मध्य जो भी विभाजन कार्य का हुआ है वो उसको उसमें दर्शाना होगा। ये हमने उनसे अपेक्षा की है। थर्ड रिपोर्ट जो हमारी आएगी वो ये थर्ड रिपोर्ट में विद्यार्थी द्वारा जो भी अभी आई है, किया गया है उसका रिजल्ट चेक करो। पृथक पृथक रूप से उसे प्रस्तुत करना होगा। जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन उसने फिगर्स लिए हैं उसका एनालिसिस, उसका संख्यात्मक आंकड़ों की सांख्यिकीय एवं तकनीकी विश्लेषण एवं विश्लेषण या उस एनालिसिस का उसका बेसिस क्या है ये उसको थर्ड प्रतिवेदन में बताना होगा। और जो फाइनल रिपोर्ट होगी प्रोजेक्ट की वो इस प्रकार से, उसमें हमने जो चाह रहे हैं वो इस प्रकार से चाह रहे हैं कि परियोजना का शीर्षक हो, विद्यार्थी का मौलिकता घोषणा पत्र हो, जो सुपरवाइजर है उसका एक अनुमोदन पत्र हो, संस्था व्यक्ति मार्गदर्शक द्वारा जो भी कार्य जिसके साथ में किया है कार्य उसने जो कार्य किया है उसका पूर्णता प्रमाण पत्र हो, आभार अनुक्रमणिका, और उसको जो 7th पॉइंट है उसमें उसको 3 चैप्टर्स उसको तैयार करना है। उसमें तो पहला चैप्टर जो उसका होगा वो ये है कि परियोजना कार्य का परिचय, क्षेत्र, पृष्ठभूमि, साहित्य, समीक्षा, परियोजना कार्य की योजना, उसकी प्रासंगिकता एवं लक्षित रिजल्ट्स, संबंधित कार्यस्थल संस्थान का विवरण जहां उसने कार्य किया है, और सेकंड के अंदर जो है वो उसने जो भी इंफॉर्मेशन फील्ड सर्वे किया है उसमें क्या उसने मेथड्स वगैरह यूज किए हैं उसके बारे में वो लिखेगा। थर्ड चैप्टर जो है उसमें उसके रिजल्ट्स, उसका एनालिसिस और चैलेंजेस सॉरी उसको प्रोजेक्ट में क्या चैलेंजेस है इस संदर्भ में वो अपनी बात उसमें मेंशन करेगा और अपना कंक्लूजन वो इस पे देगा, रेफरेंस भी वो इसमें देगा। तो इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट वाला इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम लोग पूर्ण करवाना चाह रहे हैं, ये हम लोगों की मंशा है। और इस प्रकार से अभी जब हम सभी लोग यहाँ पर फिजिक्स के प्रोफेसर्स हैं तो हमको इस बात पे सोचना आवश्यक है कि इसके अतिरिक्त भी हम किस प्रकार से और बेहतर तरीके से स्टूडेंट से उनके ओरिजिनल थॉट्स को बाहर निकलवा सकते हैं और किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हम और तैयार करवा सकते हैं ताकि वो बहुत समाज के लिए उपयोगी रहे। और इनिशियली जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि जो हमको हमारे लिए बेसिक सुविधाएं जुटाने का भी काम कर सके और हमारे पुराने ज्ञान को लेकर हम आगे होना चाहिए। थैंक यू। Thank you, Srivastava sir. Madam Poonam, are you here? Thank you, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Any questions, please? Yes, please Yes, take the sir. question, Madam Poonam. Yeah, sure, sir. First of all, sir, thank you so much for enlightening our audience with the way you are implementing this. Okay, sir, there is a question from Professor H.K. Sejwani. While making question paper, do you take care of Bloom level 1 to 6? Yes. Okay, another question. Yeah. Is the question paper made by faculty or is it automatically created randomly from
question bank. MCQs जो हैं वो तो रेंडमली होंगे और बाकी जो है वो यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं वो तो प्रिपेयर जैसा हम यूजुअली करते हैं उसी प्रकार से होंगे. Okay. Sir, one more question. How do you assess project and course objectives? प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने आपको बताया कि 3 रिपोर्ट्स हम लोग जो है उनको ले रहे हैं और उसमें जब स्टूडेंट हमारा प्रोजेक्ट लेगा तो उसमें हमको आउटकम भी बताना पड़ेगा कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में उसको क्या लर्निंग है, क्या वो सीख के आ पा रहा है. तो वो लर्निंग आउटपुट हम बताए पहले ही मेंशन करना होगा और जब वो उसका एवोल्यूशन होगा तो वो एक एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी से अपॉइंट होगा जिसके माध्यम से ये प्रोजेक्ट का एवोल्यूशन होगा. एक इंटरनल रहेगा जो कि उसी उनका जो सुपरवाइजर है वो होगा. Okay. Thank you, sir. Another question is by Professor Manish, sir. What are the expectations from a student for UG thesis? Yes, that is. अभी इसके ऊपर अभी हमारा विचार चल रहा है क्योंकि अभी 4th ईयर पे अभी हम लोगों ने 1st ईयर का ही पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाया है. 4th ईयर में यूजी थीसिस में और प्रोजेक्ट में यही 1-2 बिंदु ऐसे हैं जिससे हम हमारे जो IAPT के मेंबर्स हैं उनसे भी हम सलाह लेना चाहेंगे कि उसमें क्या होना चाहिए. अभी 4th ईयर वाला पार्ट जो है उसमें यूजी थीसिस और प्रोजेक्ट दोनों हैं और प्रोजेक्ट भी 12 जो है वो क्रेडिट के हमने रखे और यूजी थीसिस और मेथोडोलॉजी वाला पार्ट भी उसमें जो है वो हम लोग रखना चाह रहे हैं. तो अभी यूजी का 4th ईयर का सिलेबस हमारा पूरी तरह से कंप्लीट फाइनलाइज नहीं हुआ है. So let me add in this one. So we have the MSc student at SPS GNU. They do project with us either in 4th semester for physics and for chemistry they do in 3rd as well as in 4th semester. Okay, but those project students also submit a thesis. In fact, a project report you can say, and they try to publish some articles as well. Okay, Right. so means project work and thesis is not a different. I think it should be implemented in this way. And we should motivate. Both will be same. Motivate. Both will be same. Thesis and project report will be same. Yes, you can say in this way because it totally depends upon where you are going to evaluate your thesis. If it is by the internal teacher, then you can say it is report just only. If you are sending it to the outside expert, then you can say, okay, so the outside expert can come and evaluate your thesis on the spot. But Right. I want to say that if you can motivate your UG students, they can mold their career towards the research in at BSc levels as well. Okay, so during the project, the teacher should motivate them to publish some papers and go for some devices if it is possible by some instruments. Okay. Okay. Sir, this is Seema Vats. I teach in Delhi University. We have in final year this dissertation, basically. The student has to do some project work. Problem is given by the supervisor. And then he has to publish a few chapters on that, 3 or 4 chapters with conclusion. And then this is being assessed by the one internal examiner from the university itself, and then 2 others from other than this DU university. So we already are having this thing in 3rd year for final year students. Right. Okay. After Okay. this healthy discussion, one more question by Dr. Arvind. What about teacher training for implementing NEP? हम लोगों ने जो MP गवर्नमेंट ने किया था वो हम लोगों ने FDP पहले के माध्यम से करीब 1000 हमारे जो टीचर्स हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद में वो कंटेंट डेवलपमेंट के संदर्भ में और हमारे जो पूरी योजना है उसके संदर्भ में उन लोगों को जो है ट्रेन किया गया है. Okay. Rest, I can see only the appreciation mark in the chat box, sir. So thank you so much, sir, for such an enlightening and informative lecture. Sir, your bright ideas and comforting guidance has a great positive impact on audience. Sir, indeed, your words have inspired us a lot for this NEP. Now, I request Professor P.K. Ahluwalia, sir, the President IAPT, to share his remarks about today's lecture. Over to you, sir. Thank you very much, ma'am.
before I really come to remarks, I would like to really ask a few questions. Sir, मुझे इजाजत है, श्रीवास्तव सर. मेरे जो प्रश्न हैं वो मैं बाइलिंगुअल ही बात करूंगा आपसे. आपने बड़ा अच्छा किया आज बाइलिंगुअल चीजों में चर्चा करी. मेरा जो पहला प्रश्न है वो है कि आप जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे थे प्रारंभ में अपने लेक्चर के, जी, तो वो आप इसमें कैसे इंक्लूड कर रहे हैं? जैसे मैं फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ सर, उसमें इंक्लूड ऐसा किया है जैसे रामचरितमानस, ये हमने जो बेकल पे ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उसमें इस तरह के कुछ टॉपिक्स या कुछ सिलेबस हमने प्रिपेयर करके डाले हैं. रामचरितमानस के संदर्भ में नॉर्मली वैसे लिटरेचर वाले ही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अब ये ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट होने के कारण कोई भी इसको जो है वो उस सिलेबस को पढ़ सकता है, जिसमें कि रामचरितमानस से किस प्रकार से हम जो है वो अपनी दैनंदिन लाइफ के अंदर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, नैतिकता को ला सकते हैं, आदि आदि. पर ये तो इसकी संभावना तो जो हिंदी का कोई एक पेपर आपने रखा है उसमें रहती थी. नहीं, उसमें तो अभी तो वो कांस्टेंट था ना कि हिंदी लिटरेचर वाला ही स्टूडेंट उसको पढ़ता था. अब इस तरह के जो टॉपिक्स हैं या इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो किसी एक विशेष विषय में होते थे, उसको ओपन इलेक्टिव में डाल देने से ये हुआ कि किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी उसको ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ले सकता है. और दूसरा मेरा प्रश्न है कि व्हेन यू कॉल इट ए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जी, तो चॉइस का मतलब क्या है? चॉइस, इट्स एन ओपन चॉइस that student can take a major, say physics, and with that one can study economics, and with that यस एक्चुअली इसमें अभी कुछ कॉन्स्टेंट्स हमने लगा है. कुछ कॉन्स्टेंट्स ये हैं कि जैसे हमने एट प्रेजेंट वी आर हैविंग द साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स एंड कॉमर्स, इस तरह से मैनेजमेंट, इस तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं. अब इस चीज के अलावा मेजर सब्जेक्ट जो है अभी इन्हीं को बेस बना के, जैसे साइंस बोला तो साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको एक कोर सब्जेक्ट बोल दिया, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है उसको हमने कोर सब्जेक्ट बोल दिया, और कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, उसको कोर सब्जेक्ट बोल दिया. अब मेजर सब्जेक्ट में किसी एक कोर का उसने लिया है तो माइनर सब्जेक्ट को वो उसी कोर का लेना है, और जो थर्ड ओपन इलेक्टिव है वो किसी भी कोर का हो सकता है. तीसरा ये था कि जब आपने ये सारी स्कीम बनाई जी, तो आपको जो टीचर्स की जरूरत है, जी, या जो आपके आज के टोटल नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल हैं उनके जी. साथ ये फिक्स हो जाती है? वर्कलोड कितना बढ़ता है? बहुत बढ़िया सर. तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? क्योंकि अगर उसके टीचर लिए नहीं तो मिलेंगे, सरकार जो करेगी वही करेगी सर. उसमें अपन लोगों का बहुत उसमें सरकार का तो कहना यह है कि वो करेगी. चलिए ठीक है. और सेकेंडली एक और चीज थी, जो आपने सिलेबस डिजाइन करे, जी, क्या वो आपने अपने सिलेबस बनाया, या आपने वो जो यूजीसी का एक मॉडल सिलेबस है और लर्निंग आउटकम्स हैं उनको लेकर के आप आगे बढ़े? यूजीसी का जो सिलेबस था उसको बेस बना के हम लोगों ने अपने सिलेबस स्वयं ही बनाया है, मतलब एमपी गवर्नमेंट ने ही बनाया है. सेंट्रल कमेटी हमने बनाई थी जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज के जो है वो प्रोफेसर उसमें इन्वॉल्व थे, और सब्जेक्ट वाइज जो है वो अलग अलग जो है वो केंद्रीय मंडल बोर्ड हमने बनाए थे. उन बोर्ड्स के हिसाब से यूजीसी के सिलेबस को बेस बनाकर हम लोगों ने हमारी जो लोकल आवश्यकता है उसके अनुरूप उन सिलेबस को कुछ डिजाइन किया. और एक बात जो मुझे और नजर आई वो ये थी कि आपने ना ग्रेडिंग का कोई जिक्र नहीं किया इसमें. आपने नंबर के बारे में बात की, 100 नंबर का होगा और 40 नंबर क्रेडिट का होगा. एक्चुअली उसको 100 नंबर मतलब हमने जो है 2 क्रेडिट की बात की है. नहीं, ग्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ग्रेडिंग की. हाँ, ग्रेडिंग की अभी कोई बात नहीं की है. क्योंकि ग्रेडिंग की कोई बात नहीं. ये क्योंकि इसमें सिर्फ ये है कि मतलब जो है वो अभी यदि इतना क्रेडिट वो अचीव कर लेता है तो इट्स ओके. तो ये मेरे कुछ ना थे प्रश्न जो मेरे मन में आ रहे थे, अब मैंने पूछ लिए. और मैं अब आपसे एक तो कुछ अपनी चीजें जो हम इस सीरीज के बारे में हम सोच रहे हैं उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा. आई थिंक इट हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टुडे लिसनिंग टू प्रोफेसर श्रीवास्तव.
And I think we need to really think very, very seriously about this. We cannot really say like this that, okay, we are going to have the cart, we are going to have things sitting in the cart, but the main person who is required to pull this cart, we can bring students, ask them to sit in the cart. But the person who is the real, mover of this, how he is going to be made available to the students, that's the biggest challenge, because the real money involved is there. And if we are not going to provide that kind of a money, it will be very difficult to say that our education policy is going to be delivering the kind of dream which it is actually creating for us. This is one very pertinent thing which we must really look at. But there are a few other things also which I really like Professor Srivastava's in the Professor Srivastava's presentation. And that was that at the state level, you have tried to follow what was done under Rashtriya Uchitar Shiksha Abhiyan as part of creation of e-resources. What has been done on the InfluibNet website, where lots of papers are available to us. And you are creating your own resources also. That's good. And that's very, very nice. And I think with the exposure of technology during the pandemic time, we will be able to really bring a lot more people now into that fold who would have been otherwise reluctant. This is one plus point which I am seeing. But sir, there is another thing which is very, very important to look at. And that is that should we really discover the wheel again and again? For example, lots of such courses are available to us, even in the context of physics, at the undergraduate level as well as the postgraduate level. Don't you think that the effort should be maybe for a state like Madhya Pradesh in that direction, where what we do is we try to convert those courses into courses where we use different languages and dub those languages on top of those courses itself. Because there is one thing which will happen. We will be able to gain, a lot of time in this way. Second thing is that we will be able to encourage that kind of a provision which is being made in national education policy, that we can really go towards multilingual kind of an environment. So if we have 22 languages in the country which are officially recognized, can we really go for that kind of a speed up program? I would call it as a speed up program, where we take those courses and dub those courses, because this is a kind of model which was actually talked about by Professor Kannan Modgille also. See how fast they were able to convert their base English, videos into multilingual videos. And in that, they involved very many people. This is another point, I think, which is very, very interesting, which is emerging from your particular talk. And I think you must really look into it. Another thing which, sir, I want to talk is this. And I think we need to even take up that point at the IAPT level. And that point is that there was a time when the language academies of the country in different regions were given a task to translate textbooks from foreign authors into Indian languages. I know I have seen those books. In our library also those books are available. For example, I saw Landau Lifshitz book on statistical mechanics being translated into Hindi by Haryana Bhasha Akademi. Similarly, such different academies were made part of that. I think we must dig out those books also in the context of physics, and maybe add more such books into the translation process also. And because today artificial intelligence is available, with the help of which we can convert something into a text and then get that into another language in which we desire, I think that is also highly desirable. मैं तो बल्कि करता हूँ ये कि अगर मैंने कोई फेसबुक पे मैसेज अपना अंग्रेजी में लिखा है तो मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उठाता हूँ वहां से
और कहीं से मुझे मैसेज करना होता है तो मैं हिंदी में मैसेज करके डाल देता हूँ। तो ये सारी चीज़ों को हमें इसमें लाने की ज़रूरत है ताकि हम आगे बढ़ सकें। तीसरा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें और प्रोफेसर श्रीवास्तव आपसे तो मैंने रिक्वेस्ट भी की है उसके बारे में, IAPT की तरफ से हमको वो सोचना है कि ये सीरीज के बाद ये जो हमने सीरीज की थी, इट वाज बेसिकली ए कर्टेन रेजर फॉर अस. It is not the actual task. The actual task is going to follow from here. And that task is that in the subject of physics, for example, you are doing something, we are doing in Himachal something, in Delhi something is being done. Actually, we should come together and try to bring things to such an extent where all those things get included in the context of national curriculum framework, where learning outcomes and the learning objectives which Professor Sehjwani was talking about are really included in a detailed manner. Plus, we are able to talk about a good question bank. And that too, in the context of, once again, what Professor Sehjwani was saying, each question being marked with a suitable category out of Bloom's taxonomy of the 6 levels. If we will be able to do that, I think we will have good quality questions, and those can be, used for doing, and that opens up other windows also for us in looking at how people learn. I'm really emphasizing on that so that we can see where are the learning gaps. And I think for physics people, this is very important to keep in mind that we have a very well established way of seeing how people learn physics in the form of physics education research. I think audience sitting here must be knowing that this has been brought into mainstream learning also in physics. And who initiated it is Professor Carl Wieman. Earlier he was in Colorado University, and we have now a journal also fully dedicated to physics education research. And maybe we are going to really talk about PER later. Maybe in one of the series of such programs, we'll try to go to that also, where we find that very many people from other subjects, like for example, economics, like for example, chemistry, like for example, the various other areas like geography, they many a times, come forward and say, what are those things which we can learn from the researchers of physics education research itself? I think we in physics are leaders in that area also. We need to really focus on those points and come out with some kind of, what you call researched ideas about the learning of our students, so that we can bring those kinds of programs also, which can definitely get, say, active learning into our, scheme of things when we talk about the syllabi, or we are able to talk about learning styles of various topics which people are talking about. And you need to really also think in terms of some other kinds of things which are available to us right in India. I am talking about Association of Indian Universities. Association of Indian Universities at one point of time has done a lot of work in the design of questions, question banking. They have a question bank in physics also. We need to really digitize that. That's a very important point which we should really look at. I would like you to really go to your old libraries and try to see that thick question bank of physics is available or not. I think that is, once again, the role where IAPT can be proactive, converting those question banks into digitized things. And once we are able to do that, once we are able to create those kinds of things, we will have a holistic view of our syllabus itself. And if in the next 2 years, if we are able to go on that path in a dedicated manner, I think the purpose of your lecture, sir, will be definitely achieved.
And this is the kind of vision we should really carry with us in near future. Delhi teachers have got a lot of experience because they were already exposed to a 4-year program of undergraduate degree. I remember Professor Dinesh Singh was, pushing that program. I happened to visit some colleges in the Delhi University also, and I saw beautiful projects emerging out of that initiative. I think there are a number of such projects available with our members of IAPT on physics also. I think Ma'am Seema Vats and Ma'am Poonam and Yogesh would agree with me that those are the things which we need to really share. Please get those things out of the libraries, out of your cupboards, and share those with the community on the Indian Association of Physics Teachers Forum itself. I think that will be a wonderful thing to do. Yes, That is our goal. That is what definitely. And I will really request you, rather I will make this request with folded hands. Here is an opportunity. We should not be, finding ourselves wanting that हमने कुछ किया नहीं. ये opportunity है जब आप चीजों को एक दिशा दे सकते हैं, और वो दिशा देने का आप समय है. इसीलिए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है. और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइमलाइन अगर हम देखें एजुकेशन की, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब आई है, इस पे लगभग कंट्री में कंसेंसस है. उस कंसेंसस का हमको फायदा उठाने की जरूरत है, और उस फायदे को अगर हम उठा लें तो मेरे को लगता है जिस गुणवत्ता की हम बात करते हैं, जिस क्वालिटी एश्योरेंस की हम बात करते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ सकेंगे. मुझे आज आपने ना प्रोफेसर शरद पात्रा जी का भी भाषण सुना, और ये बहुत इनोवेटिव डायरेक्टर हैं ट्रिपल आईटीज में से. अभी एक प्रोग्राम में इनके मैं भाग लेता हूँ ऑलमोस्ट ऑन द डेली बेसिस. वहां पर इन्होंने ना मूक्स डिजाइन करने शुरू किए हैं, और वो मूक्स जो हैं डिजाइन जो ये कर रहे हैं, आप देखिए टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट इस चीज पे मूक डिजाइन कर रहा है. उनका ये मानना है कि हमें ना ऐसे मूक्स बनाने हैं जिनमें कॉमन आदमी भी जो है हमारे साथ जुड़ सके. मैं आपको एक ना टाइटल शेयर करना चाहूंगा मूक का, जो मेरे साथ हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं ट्रिपल आईटी वडोदरा में, उन्होंने अभी शेयर किया था. अभी कल की ही बात है, उन्होंने वो मेरे साथ शेयर किया, और उसका टाइटल बड़ा मजेदार लगा मुझे. आप भी सुन करके काफी हैरान होंगे उस टाइटल को, कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और क्या हमें देने की भी कोशिश कर रहे हैं. और वो टाइटल जो था वो आप यूं कह सकते हैं कि हमने सोचा भी नहीं होगा कि हम उस टाइटल को कैसे बनाएंगे. हाल ही में हमारे ग्रुप में, जो हमारा IAPT का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक बहुत अच्छी टेड टॉक शेयर हुई थी. सीमा मैम, योगेश जी और पूनम जी, आपने वो जरूर देखी होगी. मनीष जी ने भी जरूर उसको देखा होगा, और कुछ समझने की कोशिश भी हमने की होगी. वो क्या है, वो जो that was around music and music's link with physics. In that TED talk, they only talked about equally tempered scales and the one which is not equally tempered. That means Indian tempered scale itself. Now, what this MOOC is designing is music, machine, and the man. Okay, this course, very interesting course, music, machine, and the man, and they are going to really offer it in summer of 22. और उसमें ना हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात की हुई है. जब आप भारतीय परंपरा की बात कर रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगा मैं आपसे इस काम की चर्चा जरूर करूं कि कैसे एक फिजिक्स के कोर्स में या एक टेक्नोलॉजी के कोर्स में उन्होंने भारतीय परंपरा को साथ में जोड़ करके लाने की कोशिश की. आई थिंक जब ये लॉन्च होगा तो मैं IAPT में जरूर बताऊंगा ये कि ये लॉन्च हो रहा है, आप इसको प्लीज ज्वाइन करो. और उसमें वो ना कंप्यूटेशनल स्किल्स की बात कर रहे हैं. हम पाइथन
में बैठ करके कैसे एक सिंथेसाइजर डिजाइन कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। हमारी जो 22 श्रुतियां होती हैं उनमें और वेस्टर्न म्यूजिक में क्या फर्क होने वाला है उसकी वो बात कर सकते हैं। और उसको जो सीवी रमन ने रिसर्च करी हुई है उसके साथ हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब आप देखिए स्कोप ऑफ द कोर्स कैसे डिजाइन होता है। और हमें लगता है हमें ना जो ये आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इनमें इन चीजों की तरफ भी, क्योंकि आप मेरे को लगता है उस एपेक्स बॉडी में बैठे हुए हैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, जहाँ पे आप ना इन चीजों को फिर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं और हमारे सामने भी एक नए उदाहरण आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगर वो आप हमारे साथ समय समय पर शेयर करते रहेंगे तो मेरे को लगता है हम लोगों को इसका बहुत लाभ होगा और मुझे अच्छा लगेगा कि हम उस दिशा में बढ़े। और आईएपीटी को जैसे नॉलेज कमीशन ने कभी रिकॉग्नाइज किया था कि ये एक बॉडी है जो एक मॉडल के रूप में काम कर रही है, हम उसको इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वही धार दे सकें। अगर वो हम धार दे सकेंगे तो हमारी इस बॉडी को ना सक्सेस मिलेगी, मैं तो ये मानता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप हालांकि एक मीटिंग में व्यस्त थे उसके बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला और मैं यहाँ पर उपस्थित सारे जो हमारे श्रोतागण हैं या देखने वाले हैं इस कार्यक्रम को, उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने RC01 की इस पहल को नेशनल लेवल पर पहुंचाने की कोशिश किया। मेरी एक और जो है आप सभी से जो यहाँ पे बैठे हुए हैं आईएपीटी से जुड़े हुए लोग हैं वो ये है, हमारे 22 रीजनल काउंसिल्स हैं। हर एक रीजनल काउंसिल को साल में अपने तो वो प्रोग्राम करे ही करे, पर एक प्रोग्राम नेशनल लेवल का भी करे। जैसे RC01 ने एक मॉडल प्रस्तुत किया है, ऐसे एक मॉडल जो है हर रीजनल काउंसिल प्रस्तुत करे उस लेवल पे और एक अच्छे लेवल के जो क्वालिटी हम प्रोग्राम है उनको जनरेट करें। और हमारे पास देखिए ये लाइव जो है यूट्यूब पे जा रहा है, अगर हम जितनी हमारी ये वीडियो बन रही हैं उनकी जर्नल छोटी मोटी एडिटिंग करेंगे तो हमारे पास बहुत अच्छे सेट ऑफ लेक्चर्स भी तैयार हो रहे हैं। तो हमको उस दिशा में बढ़ना है और मैं विशेष करके JNU का भी आईएपीटी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जिम्मेवारी जो है वो उठाई। और प्रोफेसर केदार सिंह जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, डीन स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज हैं। प्रोफेसर मनीष यंग हैं, एंथुसियास्टिक हैं इस किस्म की चीज़ें करने के लिए। हमारी जो एक टीम है विशेष करके RC01 की, जिसमें मैम सीमा वत्स हैं जो लीड ले रही हैं, वो लीड जो ले रही हैं उसके पीछे भी बहुत ज़बरदस्त जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट वाली टीम है ना वो काम कर रही है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और ये है तरीका काम करने का आईएपीटी के लिए। और देखिए आज सहजवानी जी हमारे साथ जुड़े पड़े हैं और सहजवानी जी ने इतना अच्छा ऑर्डिनो पे हमें एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिए RC01 में। अभी पीछे कन्नन मडगिल्ली जी आए थे तो उन्होंने बात की थी ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी सिखाया जा सकता है, इंटरनेट पे क्लाउड के ऊपर ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और जब हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं सर, तो कई बार हमें ये भी दिक्कत होती है कि हम वो प्रोजेक्ट लाएंगे कहाँ से, टीचर के भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो आईएपीटी कैन एक्ट एज ए बॉडी वेयर वी कैन हैव ए लिस्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स अवेलेबल। हम उनको बनाएं, हम ये सोचें कि हम अपने विद्यार्थियों से क्या करवाना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और देखिए हमारे देश में ना क्वालिटी की कमी नहीं है, उसको सिर्फ एक रास्ता देने की आवश्यकता है। और दिल्ली वाले लोगों के पास तो पक्का वो एक्सपीरियंस है 4 साल के कोर्सेज को रन करवाने का, है ना। अब हम दोबारा से वहां पे आ गए, वो मैं कह रहा था ना, वी आर डिस्कवरिंग साइकिल अगेन अगेन, हम फिर दोबारा से उसी जगह पे पहुंच गए हैं। बट चलिए अच्छी बात है, अगर हम फिर दोबारा से
सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो माना वो एक किस्म से भूला हुआ नहीं माना जाता है। तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो यहाँ पे श्रोता हमें सुन रहे हैं, वो जरूर हमारे अन्य श्रोताओं को जो इस हमारे प्रोग्राम में भाग नहीं ले सके हैं, उनको कहेंगे कि आप उन लेक्चर्स को जाके सुनिए। उनमें बहुत कुछ है जिसके बारे में हमको बात करने की जरूरत है आपस में। एक बार पुनः मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ और आपसे बात करके और आपको सुनकर पात्रा सर को, श्रीवास्तव सर को और हमारे प्रोफेसर केदार जी बहुत सौम्य स्वभाव के वो व्यक्ति हैं, उनको सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। मुनीश तो मेरा दोस्त है, उसको मैं अब सर नहीं बोलता हूँ, वो मेरा दोस्त है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी, आपके पास फिर Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Sir, I can see some raised hand. So, first of all, I would like to invite Dr. Shashi Bala. Ma'am, if you have any question, please ask. हेलो Yes, ma'am. सभी साथियों को और नमस्कार। मैं शशि बोल रही हूँ रामजोस कॉलेज से। Yes, और ma'am. मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ाती हूँ। मेरा सर से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे हम यहाँ पहले थर्ड ईयर में बीएससी फिजिकल साइंस और ऑनर्स वालों को वो प्रोजेक्ट बनाते थे, प्रोजेक्ट की ऑप्शन होती थी जो कि यूनिवर्सिटी ने बाद में बंद कर दी। तो अभी जैसे अब रिसर्च की ऑप्शन है स्टूडेंट्स के पास। कुछ स्टूडेंट्स वो डिसर्टेशन लेते हैं, कुछ नहीं लेते। तो मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट्स अपने हाथ से प्रोजेक्ट बनाएं। वो थ्योरी तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जब वो अपने आप नहीं बनाएंगे, अपने हाथ से नहीं बनाएंगे, तो कम सीखेंगे वो। तो वो प्रोजेक्ट की ऑप्शन दोबारा से शुरू करी जाए अलोंग विद द रिसर्च वर्क, क्योंकि रिसर्च के जो टॉपिक होते हैं वो एडवांस टॉपिक्स होते हैं और नॉर्मली वो असाइन किए जाते हैं बाय द प्रोफेसर कि आप इस फील्ड में रिसर्च करो, और वो स्टूडेंट्स का लेवल उतना होता नहीं है। मैंने देखा है डिसर्टेशन में पिछले सालों में वो टॉपिक प्रोफेसर के द्वारा दिए जाते हैं। ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं उसका एक वो पार्ट दे देते हैं उनको कि आप इस पे रिसर्च करो, और वो स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है। वो 2-3 महीने में या उतनी जल्दी वो उसको सीख नहीं पाते हैं। तो मेरा अभी ये कहना है कि प्रोजेक्ट का ऑप्शन दोबारा से शुरू करा जाए जो कि उनके डायरेक्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, और वो लैब में खुद बनाए अपने हाथ से, तब उनके अंदर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और दूसरा ये वाला जो रिसर्च का ऑप्शन है ये भी कंटिन्यू करा जाए, लेकिन ये प्रोजेक्ट वाला दोबारा से स्टार्ट किया जाए। जो वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, उसी को वो बनाए अपने हाथ से अपने टीचर्स के सामने। क्योंकि बाजार में तो बहुत बने बनाए मिलते हैं, वो खरीद भी लाएंगे, लेकिन टीचर के सामने जब बनाएंगे वो, तब वो सीखेंगे और उनके अंदर सब्जेक्ट के लिए एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू। Thank you, ma'am. Next, Dr. Manish. Dr. Manish, you can unmute yourself, and if you have any question, please ask. Okay, I think he is not here. Next, Dr. Yogesh. Yeah, thank you, ma'am. I do agree with Shashi Bala, ma'am. क्योंकि हम ये यूजुअल एक्सरसाइज करते थे जब हम बच्चों को प्रोजेक्ट देते थे, और उनकी लर्निंग जो हम देखते थे हैंड्स ऑन करने के बाद, उनकी लर्निंग बच्चों की बहुत अच्छी होती थी, जो कि एक डिसर्टेशन में शायद वो एक स्कोप जो हम देखना चाहते हैं बच्चों का, वो शायद हमें नहीं मिलता है। तो बस मुझे इतना ही कहना है कि शायद अगर हम प्रोजेक्ट भी उसमें इंक्लूड करेंगे तो एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा और बच्चे को कुछ सीखने को भी मिलेगा। That's I all want to say. Thank you. Thank you so much, sir. After such a healthy discussion and the remarks from Professor Ahluwalia, sir, now I request Dr. Vijay Kumar Goyal, School of Physical Sciences, Jawaharlal Nehru University, to propose vote of thanks.
Over to you, sir. Am I audible, ma'am? Yes, sir, you are. Thank you. Thank you so much, Dr. Poonam ji and Professor Manish Kashyap ji, for giving me this opportunity to propose the vote of thanks today on this fourth meeting today of the Marathon Online Lecture Series on National Education Policy 2020, Implementation Challenges and Path Ahead. That is organized jointly by School of Physical Sciences, SPS JNU, and Indian Association of Physics Teachers, IAPT, which started on February 19th and will continue till 2nd April 2020. First of all, on behalf of the organizing committee, I wish to thank Professor Sarath Patraji, Director, Indian Institute of Information Technology, Vadodara, for sparing his valuable time from his very busy schedule. Even while traveling today, he has spared the time and graced the occasion. And we are very thankful to you, sir. And you rightly pointed out the requirement of teaching in at the higher level of education in multilingual mode, mother tongue. That will definitely help the students to grab the subjects, get hold on the subject more properly. Thank you so much, Patra sir, once again. Words will not be enough to thank Professor B.D. Srivastav sir, HOD Physics, Government PG College Dhar, Madhya Pradesh, and President IAPT RC09 for sparing his valuable time again for delivering a very knowledgeable talk today on NEP 2020 as it stands. And the multilingual and disciplinary mode of education in NEP 2020, as mentioned by you, sir, will definitely help the students to achieve their respective career goals. And education budget increase, as mentioned by you, from 4.4 to 6% in this proposed budget in NEP 2020. With the help of collaborative partnership in public-private sectors, will also help to develop a better infrastructure in education. आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, कोई व्यक्ति योग्य नहीं होता है, उसे योग्य बनाने वाले जो हैं वो दुर्लभ होते हैं। हमारा भारत जो है सदियों से विश्व गुरु रहा है और गुरुओं की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसको भी वो अपना जो ये है वो प्रभाव शिक्षक अपने छात्रों पर देता है और ऐसे छात्र जो हैं वो हमेशा ही गुरु के मार्गदर्शन में अच्छी ऊंचाइयों तक जाते हैं। तो हमारी शिक्षा नीति में अभी NEP 2020 में हम और अधिक ऐसे योग्य शिक्षक और छात्र हम निर्माण कर सकेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर श्रीवास्तव जी once again for sparing your valuable time. And no event can be successful without the participation of the audience. So this audience which is sitting here and listening carefully and from beginning to end, they are sparing their valuable time. And we, the organizers of this event, are always very thankful for continuously coming and attending your time. Every Saturday we are having these lectures, and most of us are always coming and sitting from beginning to end. We are very thankful to all the audience who are sitting here. Finally, I wish to thank the members of organizing committee, the Dean of School of Physical Sciences, Professor Kedar Singh ji. He always encourages us to keep organizing such events and wholeheartedly support all the infrastructure for required for the events. Professor Manish Kashyap ji, convener of the event, Professor Ram Sagar ji, Professor Ram Prasad Prajapati, Dr. Pavan Kuleria, and the members from IAPT, Professor Alu Walia ji, आज आपका जो मार्गदर्शन मिला, इतने अच्छे से आपने पूरे प्रोग्राम को समराइज किया और बहुत ही इंस्पिरेशनल वे में आपने पूरी जो आज की इवेंट थी उसका किया। थैंक यू सो मच प्रोफेसर आलू वालिया जी, डॉक्टर रेखा जी, डॉक्टर सीमा जी, डॉक्टर SK Singhal, Dr. Yogesh Kumar, Dr. Poonam Jain for conducting this event very efficiently and very smoothly. Thank you once again, all of you. Thank you for part of this event. Thanks a lot, Vijay. Thank you so much, sir. Today's event come to its completion. Before signing off formally, I once again thank the Chief
chief guest, speaker, organizing team, along with the audience for showing interest and make this event a great success. The attendance link has already been shared in the chat box. Thank you all for joining us. Thank you everyone for being a part of this lecture. We will again meet on next Saturday. Till then, stay tuned. Thank you. Stay home, stay safe, and more on stay connected. Thank you so much, everyone. Thank you.